Everyone, this is the second part of our second unit. In this video we will study the permanent relative and life cycle hypothesis. So what is the meaning of hypothesis? Hypothesis means statement, validation, that is right or wrong. What is right and wrong? It's siddhant. We all know hypothesis means siddhant. Household surveys at a point of time shows that MPC, marginal propensity to consume, is less than average propensity to consume. Long run time series data, however, shows that marginal propensity to consume is equals to average propensity to consume. Cross sectional data, time series data. APC is more than MPC. APC is equals to MPC and APC is less than MPC. APC means average propensity to consume. So what is this? Its meaning? Total consumption by total income. APC means total consumption by total income, and MPC means change in consumption due to change in income. Here the consumption depends on various factors, and income and saving plays the most important role. Consumption parameter consider permanent income, temporary income, life cycle income hypothesis, life cycle. So what is life cycle hypothesis? In line with Irving Fisher two time in temporal model 1930s, Franco Modigliani. Life cycle hypothesis was given by Franco Modigliani. And permanent income, Milton Friedman. And relative, किसने दिया था relative? ड्यूसनबेरी ने. फ्रैंको मोडिलिगियानी ने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया. रिकार्डो ब्यूमर्ग, हाँ मेन यही है. इन 1950s थ्रू देयर सीरीज ऑफ पेपर्स डेवलप्ड a model called life cycle hypothesis. According to this hypothesis, individual maximizes their lifetime utility. Consumers are rational, forward looking. These are the assumptions of life cycle hypothesis. Consumer is rational, not at all current price. Income of the representative consumer is constant until his retirement and zero thereafter. Income constant होती है उसके retirement तक. The consumer prefers to have constant consumption throughout his life. The consumer does not leave anything for the bequest purpose. The individual is supposed to spread his lifetime resources over the lifetime to allow himself annual consumption. Under this condition, the consumer must on the average save of earlier part of his life in order to accumulate a stock of wealth, retirement insurance, which will eventually be used to support consumption through this saving in the later part of this life. देखो यहाँ से कंजम्पशन मतलब यहाँ से एक पर्सन का बर्थ से यहाँ देखो स्टार्टेड ऑफ वर्किंग, धीरे धीरे स्टार्ट इनकम भी हमारी इंक्रीज़ होती है. एक पीरियड के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है. उसके बाद इवेंचुअली डिक्लाइन होने लगता है इसका, क्योंकि यहाँ पे मान लो एज एवरेज 60 है और 60 पे रिटायरमेंट हो ही जाता है, तो उसके बाद सेविंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है. इन्वेस्टमेंट, द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टर प्रोड्यूसर. इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज. देखो इन्वेस्टमेंट 3 टाइप्स के होते हैं. इन्वेंटरीज में हम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेंटरीज यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब हम एसेट में किसी इंक्रीज करते हैं. रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब हाउसिंग प्रॉपर्टी में करते हैं. आई इज इक्वल्स टू चेंज इन के. आई मतलब यहाँ इन्वेंटरीज और के मतलब चेंज इन इन्वेंटरीज इज इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. 3 types of investment: business fixed investment, residential investment and inventory investment. 3 types of investment होती है हमारी. Investment spending is most volatile component of aggregate demand and thus a major source of fluctuations of economic activities, often leads to business cycle. Inventory spending is the most volatile component. Aggregate demand is thus the major source of fluctuations of economic activities, often leads to business cycle. Importance of investment can also be highlighted through the financial market that affects the economy. We will examine the two-way relationship between investment and financial market. So first is business fixed investment. Asset of the company. Inventory is fixed asset, production increase. It represents spending by firms to increase production capacity. It is traditionally decomposed into equipment. Equipment means computer, machinery, etc. में structures, land, plants, warehouse, etc. Intellectual property, software and R&D. Cycle and development. There are 3 important theories of investment. कौन कौन सा? न्यू क्लासिकल थ्योरी, एक्सेलरेटर थ्योरी और
क्यू थ्योरी टॉबिन ने दिया था. न्यू क्लासिकल थ्योरी, एक्सेलरेटर थ्योरी एंड टॉबिन थ्योरी. द न्यू क्लासिकल थ्योरी डेवलप्ड मोस्टली बाय डेल डब्ल्यू जॉर्जसन. न्यू क्लासिकल थ्योरी, डेल डब्ल्यू जॉर्जसन न्यू क्लासिकल थ्योरी help to determine the output and price through optimal capacity stock in an economy. The accelerator theory analyzed the process of adjustment in the level of capital stock. The Q theory of James Tobin extends the new classical theory to include adjustment cost. New classical theory of investment and optimal capital stock. It is based on the idea that firms maximizes profit and use cost benefit analysis to reach the optimal level of capital stock. In our model, a typical profit maximizing firm employs labor and capital to produce its output income. Y is equals to Y. The income is a function of labor and capital. मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा? ये देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट तब जनरेट करेगा ना जब टोटल कॉस्ट कम हो, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये हमारा प्रॉफिट का होता है, पाई से डिनोट करते हैं. सो मैक्सिमम प्रॉफिट P प्राइस इंटू ये F फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल माइनस टोटल लेबर कोस्ट प्लस टोटल कैपिटल कोस्ट. टोटल कैपिटल कोस्ट, कोस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इंटू K वेज इंटू लेबर, वेजेस इंटू लेबर. Firm can purchase capital goods by borrowing from market at interest rate or from its own resources. ये होता है कैपिटल, अपने रिसोर्सेज या फिर बोरो करके होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते थे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोरोइंग या फिर पास्ट सेविंग से. वैसे ही हम अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम या तो हम वो करें, बोरोइंग करें मार्केट से, या फिर खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं इनके अपने सेविंग से ही करें. ये लेक्चर ये है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट. दिस इज द रेशियो ऑफ द राइज national income to the initial rise in aggregate demand. In other word, this is the number of times a rise in national income is larger than the rise in the initial injection of aggregate demand which led to the rise in national income. The multiplier process, it occurs when there is new demand in an economy. This leads to an injection of more income into the circular flow of income, which leads to economic growth. This leads to more jobs being created, higher average income, more spending, and eventually more income is created. मल्टीप्लाई कितनी होते जा रहा है, कैसे क्रिएशन पे ध्यान देता है. हाउस होल्ड फर्म टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात करता है. स्पेंडिंग, मैक्सिमम सेविंग, मिनिमम इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड GDP. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ईच एडिशनल पाउंड ऑफ हाउस होल्ड इनकम दैट इज यूज फॉर सेविंग. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. ये रहा हायर MPC, द बिगर साइज ऑफ मल्टीप्लायर. The government could influence the MPC by changing the rate of direct tax. Direct tax, for example, wealth tax or GST तो indirect का होता है ना, wealth tax and income tax. Direct tax for example है. If consumers have more disposable income मतलब after tax income, due to lower income tax rate, their propensity to consume might increase. The average propensity to consume is percentage of income spent rather than saved. It is calculated by total consumption divided by total income. Marginal propensity to save, a consumer's marginal propensity to save plus the marginal propensity to consume is equals to 1. If consumers save more than they spend, the size of the multiplier will be small. Marginal propensity to import, if consumers spend income on imports rather than domestic goods and services, income is withdrawn from the circular flow of income. This reduces the size of the multiplier. The average propensity to save is the income that is not spent. This is also known as saving ratio. Marginal propensity to tax क्या होता है कि this is defined as the proportion of each pound taxed by the government. The higher the rate of tax, the less disposable income each consumer has, and the smaller the size of multiplier. Spare capacity of the economy is not working in full capacity if there is a negative output gap. Spare capacity in impact of the multiplier on national income will be greater than if the economy is operating on
and inelastic short run aggregate supply curve, multiplier 1 by 1 minus MPC, multiplier national income by aggregate demand. आउटपुट गैप पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटपुट गैप, ये हमारा नेगेटिव आउटपुट गैप, ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट गैप, एक्चुअल ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, ये एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का कर्व बढ़ता जा रहा है। एग्रीगेट सप्लाई इलस्ट्रेटर ऑपरेशन ओपन इकोनॉमी मॉडल, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, ISLM नेक्स्ट वीडियो।